बताइए प्लीज। In this case, reply has been filed, Lord sir. नहीं वो तो ठीक है, बताइए ना थोड़ा सा। इनका जो आर्ग्यूमेंट है क्लॉज 1.7, इसमें इनका कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर का एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। सर ये लियन में है बेसिकली, इनकी सीनियरिटी डिस्ट्रिक्ट में ही मेंटेन तो होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट कैडर का मतलब क्या होता है बताइएगा। सर ये स्पेशल पर्पस के लिए इनको शिफ्ट किया गया है। कहाँ लिखा है ये ट्रांसफर ऑर्डर? लटेरी के लिए, लटेरी में जो अभी काफी बुरा इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद में सर कहाँ लिखा है ट्रांसफर ऑर्डर में स्पेशल पर्पस के लिए शिफ्ट किया जा रहा है? ऑर्डर में तो नहीं मेंशन। वो चीजें बता दीजिए। तो फिर सरकार को टीचिंग ऑर्डर पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? As per direction of the Honorable Court, Lord sir, conservator of forest district cadre employee can be transferred to another district or not, Lord sir. चाहिए करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ऐसा कहाँ दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर के ऑफिसर का ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट के बाहर किया जाएगा और उसका लियन मेंटेन किया जाएगा? सर ये प्रशासनिक जितने भी कहाँ है बताइए, थोड़ा सा नेट बताइए कौन सी फाइल में लिखा है। फाइल लेकर आए आप जिसमें इनका ट्रांसफर डील किया गया है? नहीं सर, वो फाइल हमको शासन से नहीं मिली। डायरेक्शन हमारे हैं। हाँ, क्या डायरेक्शन से बताइए। 26 हमने तो बुलाया नहीं था इनको। बुलाया कहाँ बुलाया? इसमें ऑर्डर में लिखा ही नहीं है। रीडिंग फ्रॉम एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया था। नोटिस इज ड्यूड बाय इतना ही मे फाइल रिप्लाई टू दिस प्ली दैट कैडर ऑफ फॉरेस्ट गार्ड इज दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर and therefore a forest guard cannot be transferred outside without affecting his seniority. List on 28/2 28/2 को भी कोई ऑर्डर अच्छा। This court is not convinced with the reply how an order of transfer can be made. Post is under this. Certainly will be maintained from his petition. Let clear rules and regulations be brought on record by the OIC. अब बताइए रूल्स कहाँ हैं आपके इसके बारे में? ये रूल्स हैं? रूल्स इसमें डायरेक्शंस हैं हमारे यहाँ। नहीं प्रशासनिक आधार पर जो भी करे जाएंगे, हाँ, उनको एक सीनियरिटी जहाँ जिस जिले से वो पूर्व में यदि कुछ स्थानांतरण हो गए हो तथा वरिष्ठता के संबंध में विवाद हो, ऐसी स्थानीय सांप्रदायिक लटेरी में ऐसा ही हुआ। हमारे ही लोगों के खिलाफ 307 का मुकदमा कायम हो गया है। हाँ ठीक है, और काफी डिमोरलाइज स्टाफ है हमारा वहाँ पर। क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने ट्रांसफर ऑर्डर में? फाइल प्रोड्यूस कर दीजिए जिसमें ट्रांसफर, उसमें लिखा है कि आपने ये सब चीजें प्रोड्यूस दी फाइल। चेक करना पड़ेगा, शासन की फाइल है। आप शासन के नहीं है क्या? नहीं है। ऑफिसर इंचार्ज जब नियुक्त होता है तो उसका काम होता है कि वो शासन के पास जाए। आप किस पद पर हैं? मैं कंजर्वेटर हूं सर, भोपाल डीएफओ। हाँ, तो आपको ये बात मालूम होगी कि जब आप ओआईसी अपॉइंट होते हैं, then you are supposed to approach the government, obtain the relevant papers, and then approach the High Court for preparation of reply. You are also supposed to get a pair-wise reply made and then approach the AG office. ये बात अलग है कि आप लोग खाली हाथ आ जाते हैं। और आप pair-wise reply बनाकर लाए थे, दिखाइए कहाँ है? नहीं सर, हमने पहले रिप्लाई फाइल कर चुके हैं सर। Lord, may I request, identical issue has been already decided by the coordinate bench of the. क्या कह दिया उन्होंने? हमने ऑर्डर विड्रॉ करने के लिए बोला, फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए बोला। आप तो इसको क्वेश ही कर देते ना। ये तो लोक अदालत का है। लिखिएगा, आई विल नॉट से एनीथिंग। लिखिएगा, petitioner is aggrieved of the transfer order annexure P1 dated 25/1/2023 in which petitioner's name appears at serial number in WP number number 11 where I am at रुक जाइए मिस्टर काउंसिल, अभी आप बीच में मत बोलने की आदत डालिए। serial number 11. हाँ, serial number 11. हाँ, 11. Serial number 11 whereby petitioner is transferred from General Forest Division Bhopal to General Forest Division Vidisha. So stop. It is submitted that petitioner was working as forest guard. It is a post of district cadre. A fact which is accepted by Shri, आपका शुभ नाम बताइए। आलोक पाठक। आलोक पाठक, conservator of forest and DFO Bhopal. Full stop. Next where it is submitted by Shri Pathak that under extraordinary circumstances, petitioner has been transferred from Bhopal to Vidisha. Full stop. It is submitted that such transfer is permissible and his petitioner's lien will be maintained at Bhopal. Full stop. Next paragraph. In support of his contention, petitioner, the OIC Shri Pathak has produced copy of
Forest Department circular dated 10th/9th August 1986, which reads which deals with determination of seniority on request to transfer from one region to another. Full stop. Opening lines of the circular reads as under. ये पीला फ्लैग लगाए देखिएगा, वन विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के स्वेच्छा से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के स्थानांतरण के संबंध में. Thus, it is evident that the guidelines which have been issued are in relation to own request transfers and not for the administrative transfers. Full stop. OIC is trying to mislead the High Court. Full stop. He has not placed any record, there is no material on record to show that. So there column number 3 में लिखा है नंबर 3 में प्रशासनिक. हाँ लिख रहे हैं प्रशासनिक पे लागू कहाँ होता है ये. क्या लिखा? Submit that transfer was made, but transfer of the petitioner was made on own request. Therefore, the aforesaid circular will not be applicable. Next paragraph. OIC has not brought on record any document to show that there is any provision under the rules to maintain the lien in one district and transfer the employee to another district, especially when he belongs to the district cadre. Full stop. OIC Shri Pathak also admits that he had not obtained file in which case of the petitioner was processed for transfer, giving reasons for his transfer from one district to another. Full stop. Thus, it is evident that OIC, who was duty bound to have obtained instructions and file from the state government, and as much as transfer order is issued by the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh Forest Department, has failed to perform his duties as an OIC. Full stop. Instructions तो मैंने दिए इनसे. लिए होंगे. Full stop. At this stage, Shri Pathak submits that he had obtained instructions from the state government. Full stop. कहाँ है वो instructions बताइए. Verbal instruction यही दिए. When he is asked to show the instructions that were obtained by him, then he submits that he was given verbal instructions. किसने दिए थे verbal instructions? नाम लिखा देते हैं उनका. किसने दिए थे? This was given by additional PCCF administration to Mr. Mohanta. These instructions were given by additional PCCF within bracket to Shri Mohanta. Full stop. Next paragraph. However, fact of the matter is that transfer order is issued by the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh. Instructions were required to be obtained from the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, or the Principal Secretary, Government of the Madhya Pradesh, as the case may be. Additional PCCF, क्या? PCCF is not state government. He is an employee of the department. He is not the employee of the Mantralaya. He had no. Full stop. Therefore, instructions were obtained from an inappropriate authority. Full stop. OIC was required to exert and should have approached Mantralaya to look into the file, in which case for transfer of the petition of the transfer policy. चलिए, ये क्या है बताइए. In my case also,